आज सेकेंड चैप्टर की लास्ट थियरी कंप्लीट करेंगे, मतलब चैप्टर की सभी थियरी कंप्लीट हो जाएगी। और वो जो थियरी है वो थियरी लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। हमने डायमेंशन एनालिसिस के 3 डिफरेंट मेथड कंप्लीट किए। फर्स्ट था द रिलेशन बिटवीन एमकेएस एंड सीजीएस यूनिट। सेकेंड था द गिवन इक्वेशन डायमेंशनली वैलिड या इनवैलिड। उसमें भी एक सबसेक्शन भी था कि सपोज गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली वैलिड, क्लियर, तो अननोन फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला डिराइव करके दो। एंड थर्ड लास्ट जो वीडियो इसमें कंप्लीट किया कि एक फिजिकल क्वांटिटी नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है, तो इसकी इक्वेशन हम कैसे कंप्लीट करेंगे, इसकी इक्वेशन हम कैसे कंप्लीट करेंगे। तो उस टाइप के 3 मेथड हमने कंप्लीट किए। आज है द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। मतलब ये डायमेंशन एनालिसिस कहाँ काम में नहीं आता, क्लियर। तो सबसे पहले तो जितने भी इक्वेशन आपने बनाए मेजॉरिटी को इन टर्म्स ऑफ एमएलटी, इन टर्म्स ऑफ एमएलएनटी। इसका मतलब किसी एक फिजिकल क्वांटिटी की रिलेशन सपोज मोर देन थ्री फिजिकल क्वांटिटी के साथ, या कोई सिंगल फिजिकल क्वांटिटी डिपेंडेंट ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी, तो उसकी इक्वेशन आप डायमेंशन एनालिसिस से कंप्लीट नहीं कर सकते। आपको पता होगा कि लास्ट मेथड के अंदर दोनों साइड की जब हम पावर कंपेयर करते थे, दोनों साइड की पावर, तो मिनिमम सिंगल या मैक्सिमम 3 इक्वेशन तक मिलता है, और तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमको ए, बी और सी की वैल्यू मिलती थी। इसका मतलब कोई सिंगल फिजिकल क्वांटिटी मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी डिपेंडेंट है, तो उसकी इक्वेशन डायमेंशन एनालिसिस से नहीं मिल सकती। इज द फर्स्ट लिमिटेशन। एमएलटी पे डिपेंड करेगा, और एमएलटी मतलब 3 आपको अननोन पावर मिलेगी, 3 इक्वेशन मिलेंगी, तो सॉल्यूशन से 3 मैग्नीट्यूड मिलेगी। मतलब किसी एक फिजिकल क्वांटिटी की रिलेशन मैक्सिमम 3 के साथ है, तो आप वो इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। इस फॉर एग्जाम्पल हमने ऐसे कंप्लीट किए हैं, h is equal to I square RT, h is equal to I square RT। बाद में हमने कंप्लीट किया t is equal to 2 pi under L by G, t is equal to 2 pi under M upon K। इसे नंबर ऑफ इक्वेशन हमने कंप्लीट किए हैं, क्लियर। ओके, इसके बाद सेकेंड एक चीज और भी है कि जब आप इस टाइप की न्यूमेरिकल कंप्लीट कर दे तो लिखा था 2 पाई प्रैक्टिकली मिलता है, यहाँ भी लिखा 2 पाई प्रैक्टिकली मिलता है, यहाँ लिखा था कि k इज इक्वल टू 1। इसका मतलब जब डायमेंशन लेस जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये डायमेंशन लेस जो कांस्टेंट इक्वेशन में आता है, इधर 2 पाई इधर 2 पाई यहाँ 1। एक और भी फॉर्मूला हमने कंप्लीट की थी याद हो तो v इज इक्वल टू अंडर 2gh, तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मतलब डायमेंशन लेस कांस्टेंट था √2। तो ये जो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है उसकी इंफॉर्मेशन इस मेथड से नहीं होती, क्लियर। तो ये सेकंड है कि जो 2 पाई √2 1 जो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है उसकी इंफॉर्मेशन डायमेंशन एनालिसिस से नहीं मिलती, क्लियर। थर्ड पॉइंट में लिखा कि सपोज लॉगरिथम मतलब बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा से, या एक्सपोनेंशियल e raised to x e raised to a ऐसे एक्सपोनेंशियल, ये सभी फंक्शन के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं मिलती या नहीं लिखते हम, मतलब होता ही नहीं। डायमेंशन एनालिसिस से इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं आती, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सब के लिए हम डायमेंशन एनालिसिस यूज नहीं कर सकते। हाँ, कहीं भी इक्वेशन में आपको दिया है तो आप इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l0 t0 ऐसा लिखेंगे, क्लियर। कौन कौन से फंक्शन बताएं, लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल, ये सभी फंक्शन के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l0 t0। एंड फोर्थ लिमिटेशंस, बहुत सारे ऐसे इक्वेशन आपने पढ़े कि जहां प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डायमेंशन लेस नहीं था,
क्लियर? एस फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, V proportional to I, so V इक्वल टू क्या लिखेंगे, IR, so R is a proportionality constant, लेकिन वो डायमेंशनलेस नहीं है, हमने इसके डायमेंशन फॉर्मूला लिखी थी. सिमिलरली F is equal to G M1 M2 अपन R स्क्वायर, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये डायमेंशनलेस नहीं है. क्लियर? तो जो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और वो डायमेंशनलेस नहीं है, तो उसकी इंफॉर्मेशन डायमेंशन एनालिसिस से नहीं मिलती. इसका मतलब डायमेंशन एनालिसिस के 3 मेथड तो हमने पढ़ी, लेकिन डायमेंशन एनालिसिस के लिए फोर लिमिटेशंस है. सबसे पहले फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज्यादा पे डिपेंडेंट है तो उसकी इक्वेशन डायमेंशन एनालिसिस से नहीं मिलती. सेकंड लिमिटेशन कि डायमेंशन लेस जो कांस्टेंट है 2 पाई 1 रूट 2 जो भी हमने इक्वेशंस में लिखे थे, वो डायमेंशन लेस कांस्टेंट की इंफॉर्मेशन भी डायमेंशन एनालिसिस से नहीं मिलती. थर्ड, लॉगरिथम फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डायमेंशन एनालिसिस में इंफॉर्मेशन नहीं, मतलब उसकी डायमेंशन फॉर्मूला हम ऑलवेज m0 l0 t0 इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. एंड फोर्थ, जहां जहां आपको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिलता है और वो डायमेंशन लेस नहीं है, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन हमको डायमेंशन एनालिसिस से नहीं मिलती. तो ये लास्ट थियरी एक बाकी थी जो मैंने आज कंप्लीट कर दी. तो इसका मतलब सेकेंड चैप्टर की सभी थियरीज कंप्लीट हो जाती है. ओके, अब जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स है, ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज में हम कंटिन्यू करना शुरू करेंगे. ओके, नाउ एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.1. A. The volume of a cube of side 1 centimeter is equal to dash meter cube. Okay, now length is equal to 1 centimeter and volume in meter cube, and therefore L is equal to 1 centimeter, that is equal to 10 raised to minus 2 meter. Now volume of cube is equal to L cube, 10 raised to minus 2 whole cube, so 10 raised to minus 6 meter cube is the answer. Then B, the surface area of a solid cylinder of radius 2 centimeter and height 10 centimeter is equal to dash millimeter square. Okay, first radius R is equal to 2 centimeter, R equal to 2, and length या height H is equal to 10 centimeter. Okay, but area, surface area in millimeter square. Okay, now therefore R is equal to 20 millimeter, H 100 millimeter. Now surface area of cylinder, surface area of cylinder formula is 2 pi RH plus 2 pi R square, 2 pi RH plus 2 pi R square. So now 2 pi R common, so now H plus R, 2 into 3.14 into radius 20, height 100 plus 20, so now 40 into 3.14 into 120, so answer is 15,072 millimeter square. So now 1.5, okay, 1.5 मतलब 1 2 3 and 4, so 10 raised to 4 millimeter square. Decimal point left side
मूव करेंगे तो जितने स्टेप आप मूव करेंगे उतना 10⁻² पॉजिटिव लिखना है. So now answer is 1.5 10⁻⁴. Is a B option. Then now C. A vehicle moving with a speed of 18 km/h and covered a dash meter distance in 1 second. So now speed V is equal to 18 km/h. Timing T is equal to 1 second. Okay, now calculation for distance. So now V is equal to 18. पहले इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे. So 1 kilometer is equal to 1000 meter and 3600 second of 1 hour. So now 0 cancel. 5 and 8. Okay, now 18. 5/18. Answer is 5 meter per second. So now velocity is equal to distance upon time, and therefore distance equal to velocity into time. So velocity is 5 meter per second. Timing 1 second. So now answer is x equal to 5 meter. X equal to 5 meter. Okay, now D option. The relative density of lead is 11.3. Relative density of lead is 11.3. Its density is gram per centimeter cube or kg upon meter cube. Okay, now relative density is equal to 11.3. Okay, the formula of relative density is equal to density of lead upon density of water. Density of lead upon density of water, and therefore density of lead is equal to relative density into density of water. So now relative density 11.3 and the density of water is 1 in CGS unit. In CGS unit. So answer 11.3 gram upon centimeter cube. Density of water is 1 in CGS. So this multiplication in CGS unit. So 11.3 gram upon centimeter cube. Now in MCAS. So 11.3 into 10⁻⁻3. So kg हो जाएगा upon 10⁻⁻2 whole cube. तो मीटर क्यूब होगा, and therefore 11.3 10⁻⁻3 upon 10⁻⁻6, and the last answer is 11.3 10⁻3 kg upon meter cube. ओके, ये रिलेशन डायमेंशन एनालिसिस के फर्स्ट मेथड में कंप्लीट किया था. तब बताया था कि सीजीएस यूनिट से एमकेएस यूनिट फॉर डेंसिटी सो मल्टीप्लाइड विद 10⁻3. सीजीएस यूनिट टू एमकेएस यूनिट फॉर डेंसिटी सो मल्टीप्लाइड विद 10⁻3. सो लास्ट आंसर इज 11.3 10⁻3 kg अपन मीटर क्यूब. तो यार दो आंसर आपको कंप्लीट करने थे. फर्स्ट इन सीजीएस
and second in MKS. Now next numerical is 2.2. Next is 2.2. Okay, in 2.2 first A is equal 1 kg meter square, second dash to minus 2, and it is equal to dash gram centimeter square, second dash to minus 2. Okay, 1 kg meter square, second dash to minus 2. 1 kg मतलब 10 dash to minus 3 in gram. 1 meter मतलब 10 dash to 2 in centimeter, rest to 2, and second rest to minus 2. फिर से 1 kg मतलब 10 dash to 3 in gram, 1 meter 10 dash to 2 in centimeter, second also in second, and power kg rest to 1, meter to second minus 2. So now 10 dash to 3 gram, 10 dash to 4 centimeter square, second dash to minus 2. So now total answer is 10 dash to 7 gram centimeter square, second dash to minus 2. But in general term, 1 kg meter square, second dash to minus 2 is called joule, and that is equal to 10 dash to 7 gram centimeter square, second dash to minus 2 is called erg. So 2.2 first question. Now 2.2. Now 2.2 second question. 1 meter is equal to dash light year. 1 meter is equal to dash light year. Okay. What is the definition of light year? The distance traveled by light in 1 year is called the 1 light year. Okay. 1 light year in meter is equal to 9.46 is equal to 9.46 10 raised to 15 meter. 10 raised to 15 meter. सिंपल कैलकुलेशन इसकी क्या होती है? सो इधर लिख रहे हैं 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 365.25 डेज 24 आवर 3600 सेकेंड 3 into 10 raised to 8 पर सेकेंड जो वेलोसिटी होगी वो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज 9.46 10 raised to 15 मीटर एंड देयरफॉर 1 मीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन ओके ये रेशियो ऊपर ले जाएंगे तो 10 into 10 raised to minus 16 so 10 upon 9.46 so now ratio is 1.057 10 raised to 16 in meter. So answer is 1.057 10 raised to minus 16, sorry, in light year, not meter, in light year. Okay, 1 light year is equal to 9.46 10 raised to 15 meter, but 1 meter is equal to 1.057 10 raised to 16 light year. Now see option number C. 2.2 option number C. 3 meter per second square is equal to dash kilometer per hour square. 3 meter per second square is equal to dash kilometer per hour square. Okay, so now change of first 3 meter per second square. Now 3 meter to kilometer. So 10 raised to minus 3. Second to R. So 1 upon 3600 whole square.
and therefore 3 into 10 raised to minus 3 into 3600 square. So total answer is 38,880 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर. सो नाउ पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो 3.888123 सो 10⁻⁴ किलोमीटर r⁻². तो आंसर 3.88 10⁻⁴ किलोमीटर पर आवर स्क्वायर. Now D option 2.2. D option. Capital G is equal to 6.67 10⁻⁻11 Newton meter square upon kilogram square is equal to dash in dyne centimeter square upon gram square. MKS to CS. Okay, but what is the capital G? Capital G is the universal gravitational constant. And the answer is 6.67 10⁻⁻11 Newton meter square upon kg⁻⁻². और ये वैल्यू कहीं भी यूनिवर्स में कभी चेंज नहीं होती और इसलिए इसको क्या बताया जाएगा? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. सो नाउ फर्स्ट G इज इक्वल टू 6.67 10⁻⁻11. उसको CGS में कन्वर्ट करना है तो न्यूटन से डाइन तो फर्स्ट 10⁻⁵ तो डाइन में हो जाएगा 1 in Newton is equal to 10⁻⁵ डाइन. क्लियर? देन मीटर स्क्वायर टू सेंटीमीटर स्क्वायर. सो 1 meter is equal to 10⁻² centimeter होल स्क्वायर अपॉन kg टू ग्राम 1 kg को 10⁻³ ग्राम होल स्क्वायर. So now 6.67 into 10⁻⁻11 10⁻⁵ 10⁻⁴ upon 10⁻⁶ upon 10⁻⁶. So now 6.67 ये 10 और ये -11 मतलब 10⁻⁴ ओनली अपन 10⁻⁶. और सपोज ये ऊपर आएगा तो माइनस मतलब 6.67 10⁻⁻⁵ 6.67 10⁻⁻⁵ ग्राम डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर g⁻⁻² is the answer. g⁻⁻² is the answer. तो ये पूरा जो न्यूमेरिकल था वो न्यूमेरिकल 2.2 है. ये न्यूमेरिकल नंबर 2.2 डी. ओके 2.1 के अंदर भी A B C D 4 ऑप्शन थे. 2.2 के अंदर भी A B C D ऐसे 4 ऑप्शन है. सो नाउ 2.3. Now numerical number 2.3. A calorie is a unit of the heat energy. It is equal to 4.2 joule. 1 joule is equal to 1 kg meter square second raised to -2. Suppose we employ the system of unit in which the unit of mass equal to alpha kg, unit of length is equal to beta meter, and unit of time is a gamma second, so that the calorie has a magnitude of 4.2 alpha raised to -1, beta raised to -2 and gamma raised to 2 in terms of the new unit. Okay, सबसे पहले 1 calorie is equal to 4.2 joule. Okay, now dimensional formula of
energy m1 L2 t minus 2. First MCAS system and then CGS. So in MCAS N1 is a 4.2, क्योंकि सबसे पहले बताया है कि ये जो है वो 4.2 जूल है, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल. ओके, नाउ M1 इज इक्वल टू 1 kg, L2 इज इक्वल टू 1 मीटर, T सभी 1, T1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड. नाउ सिमिलरली इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी है. M2 इज इक्वल टू अल्फा kg, L2 इज इक्वल टू बीटा मीटर, T2 इज इक्वल टू गामा सेकेंड, T2 इक्वल टू गामा सेकेंड. ओके, सबसे पहले इधर N2 कैलकुलेट करना है. सो नाउ N2 M2 L2 रेस टू 2, T2 रेस टू माइनस 2, N1 M1 L1 रेस टू 2, T1 रेस टू माइनस 2. So now N2 is equal to N1 M1 upon M2 raised to 1, L1 upon L2 raised to 2, T1 upon T2 raised to minus 2. So magnitude of N1 is equal to 4.2. Clear? Now M1 1 alpha raised to 1, L1 1 L2 beta raised to 2, T1 1 gamma minus 2, and therefore 4.2 1 upon alpha raised to 1, 1 upon beta raised to 2, 1 upon gamma raised to minus 2, and that is equal to 4.2 alpha raised to minus 2, beta raised to minus 2. तो ये हमको प्रूव करना था कि N2 न्यू सिस्टम में N2 इज इक्वल टू 4.2 अल्फा रेस टू माइनस 1, बीटा रेस टू माइनस 2 एंड गामा रेस टू 2. क्लियर? तो आज हमने 3 और न्यूमेरिकल किए, 2.1, 2.2, 2.3 और एक थियोरी कंप्लीट किए, द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. आज इतना कंप्लीट कर देंगे. क्लियर?